Yesterday session we learn how to work how to run an application using Docker. तो सिंपल एप्लीकेशन हमने बनाई थी कल यूजिंग डॉकर PHP MySQL की, और उसको हमने रन करके देखा था. दैट वाज द चैलेंज ऑफ yesterday, and today's challenge I am going to show you how to create a EC2 instance on AWS. कैसे हम एक EC2 instance create करते हैं to deploy our application on cloud. Let's start. So first step is, if you don't have any account on AWS server, then you need to create a account, and then you will be redirected here, EC2 dashboard. There is a instance link, instances. No instance is running right now because I stopped all the instances because otherwise they are chargeable. The AWS account, now we have to click on launch instances. Here we need to provide a name, my application, or whatever you want to give a suitable name, a meaningful name. After that, there are various OS images or OS flavors available here to go with in what kind of operating system you want to use. Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows, Red Hat, and other. So I am choosing here Ubuntu. Then after that, here we choose free tier eligibility. If you have free tier eligibility, you can choose that. We need to choose instance type. There are various instance types: T2, micro, nano, and then extra large, based on our application functionality. So here I am selecting T2 micro to demonstrate you. Then we need to create a key pair. Using that key, we are able to log in into our console account when we will try to access it on our command line prompt. तो उसके लिए हमें we need to create new key pair. I have already created my keys, so I am selecting here this one. Otherwise, we can create here new key pair, and you need to put this key within your folder where you want to log in to the command line. Then there is a network settings. Here in network settings, if you already have any existing security group, you can choose this option. Otherwise, we need to create a new security group. I have already created, so I can choose here anyone. So I'm selecting 5. After that, we need to configure the storage image. By default, it's giving 8 GB. Okay, then we are good to go. It's showing here the summary, what kind of instance we are going to create. Now launch the instance. Our new instance is initiating and it's successfully launched. Go to instances. It's pending state, but it's the processing is running in background. Very soon it will be available. It's started, right? Now we need to click on this
instance ID, and we can see the related details about the instance here. This is the basic details: status alarm, status and alarm, monitoring. We can monitor our instance here. CPU utilization, network out bytes, inbound bytes, network packets. There are various ways to monitor our instance. Then this is the security group. Here what security group we already I was created already, launch wizard, and security related we can rules we need to add here. There are already, I think, 2 rules I have already added this group, and we can add inbound and outbound rules, edit bounds if we need to edit anyone the security rule like this SSH. To access this instance using SSH, we need to add this rule, and for to allow this if we want to allow this from any we can for custom we need to identify here, otherwise we need to allow all traffic. For this we need to select all traffic and save the settings, and depending on our requirements we can add more rules in our security group. Okay, now our instance is ready, and we can use this instance to for any kind of application. So let's this is our instance public IP. Let's check this IP is working or not, or we need to install some application on this IP so that we can make sure that it's working. So right now it's not working because we haven't installed any application or anything on this. So let's connect with command line. In Windows, we can connect using PowerShell, or I have WSL as well. Here I have already copied my keys. We need to have these keys on the same folder. We need to connect with the command line instance. We need to click on the connect, and then we directly copy. We can copy this and paste and enter. It's asking, are you sure you want to continue connecting? Yes. Through Windows PowerShell, I connected to my EC2 instance. Now here we can install any application. We can follow like what kind of application we are going to install here. Suppose to run any application, or I want to just run the install the Apache and to run that application is working or not. So I can simply apt get update command. Need to put sudo this is basically the Ubuntu command when we
want to install anything, then first we need to update the repository, then the related software we can install. So sudo, now I want to apt get install Apache 2. Suppose I'm installing here Apache 2. Yes. Apache installed here. This is index.html. Now if I want to access this application, see the instance we created just now, and we install the Apache there, and now it's accessible, the Apache default configuration. That means our instance is successfully working, and the application we installed on this instance, it's we are able to successfully access it. So this is in this way you can create any kind of instance, EC2 instance. Going to stop this instance, otherwise it will charges will occur. Here you can stop the instance. After stopping few things background run in background, still the charges occur, but you need to completely terminate the instance. I hope you find it useful. So this is your today challenge. I'm giving you challenge, like today you have to create your, if you don't have any account on AWS, then create your account. If you already have, then it's fine, and try to create a EC2 instance, because this is actually learning. एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक्सपर्ट होना अच्छी बात है, बट यू नीड टू एक्सपर्ट इन डेवऑप्स एज वेल. अदरवाइज तो आपको ना हाफ नॉलेज होगा, आधा मतलब डेवलपमेंट का है लेकिन डिप्लॉयमेंट का नहीं है, तो यू हैव ओनली हाफ ऑफ नॉलेज इन योर फील्ड. और अगर आपको आगे करियर में ग्रो करना है तो इट्स रियली नीडेड, मस्ट है. आई हैव ए गुड थिंग टू शेयर with you as well. Tomorrow I received my certificate. I have successfully completed my DevOps journey. So I got my certificate yesterday. So just I would like to share with you. I hope my screen is visible. I applied. I was doing this last 1.5 year, so with the Adorka and Purdue University. So postgraduate program in DevOps. Last 1.5 years I was working on my new skill set. So just I thought I should not share with you. It was good news for me. What I learned from my past experience, what is the relation between career and life? क्योंकि if our good life, better life depends on our good career, better career. अगर हम अच्छा करियर बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम अच्छी लाइफ जिएंगे. तो ऐसा नहीं कि जब हम कई बार ठीक है करियर की बात करते हैं लेकिन लाइफ के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसके लिए कर रहे हैं, सब अच्छी लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं हम सब. सो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ए करियर एंड लाइफ. सो अगर हम अच्छा अपने करियर पर फोकस करेंगे, उस पर लर्निंग पर फोकस करेंगे, उस पर देखो, अगर आपको लर्निंग पे, क्योंकि हमारी थिंकिंग ये होती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन सर, और कि ऐसा लगता है कि हमें बहुत इन्वेस्ट कर लिया हमने,
अब हमें अपने उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। बट दिस इज नॉट ए राइट माइंडसेट, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। और जितना हम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सब अभी भी अपनी लर्निंग्स पर खर्च करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन लास्ट 1.5 ईयर में मैंने बहुत कुछ रियलाइज किया कि व्हाट आई लॉस्ट। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअसली जितना भी आप देखो, हम शॉपिंग पे खर्च कर देते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट पे कर देते हैं, पार्टियों में कर देते हैं उतना पैसा, लेकिन जितना हम इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं ना, उनका अगर हम 10% भी अपने ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर लें तो सफिशियंट है। कि हम शॉपिंग पे हम 5,000 10,000 के शूज खरीद लेते हैं, है ना। उसके बाद पार्टियों में, मतलब शॉपिंग में, बहुत अननेसेसरी चीज़ों में बहुत सारा खर्च कर लेते हैं। नॉट अननेसेसरी, वो आप अच्छी लिविंग के लिए कर रहे हो, बट दैट्स गुड। बट उसके बाद में सेल्फ लर्निंग पे भी हमें उसका कुछ परसेंटेज, कम से कम 10% तो उसका खर्च करो ही। अगर आप 5,000 रुपये उस पर कर रहे हो तो 500 रुपये अपने लर्निंग पे भी खर्च करो। लेकिन हम हमारे माइंड सेट रहता है कि हमें कुछ नहीं करना। अभी ये मैंने जो सर्टिफिकेशन लिया है, मैंने 1.25 लाख रुपए में लिया था ये। और ये मेरा 9 मंथ का वो था, कोर्स था। ये मैंने कंटिन्यूस मैंने किया, उसमें वीकेंड पे मेरी क्लासेस होती थी। तो 1 डेढ़ साल से मैं कर रहा था इसको। 9 मंथ का था, लेकिन इसमें सर्टिफिकेशन और इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों को मुझे एग्ज़ाम भी देने पड़े इसके। प्रैक्टिकल हुए थे, लैब वगैरह थी, सब कुछ था कि पूरा ये डॉकर से लेकर आपका कुबरनेटीज से लेकर आपका पूरा सर्वर मैनेजमेंट पूरा एंटायर। तो वो सब कुछ लर्न किया मैंने इसमें, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ इसकी वैल्यू उसके बाद में। क्योंकि देखो, और सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर यू गाइस, कि लाइफ में ना पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लास्ट अपने प्रीवियस इस एक्सपीरियंस से सीखा है कि इंसान को पॉजिटिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी सिचुएशन हो हमारे सामने, बट उसको हमें पॉजिटिव वे में हमेशा देखना चाहिए। कि जैसे कि ले ऑफ हुआ मेरा, तो मुझे 2-3 दिन तक लगा कि समथिंग बैड हैपेंस विद मी, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज एवरीथिंग हैपेंड फॉर गुड। अगर ये सिंगल रूल अगर हम लाइफ में अपना लेना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड, मतलब जो होता है वो अच्छा ही होता है, तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती है। देवन से उसके बाद में ये लगने लग गया कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ में, एंड आई गॉट ए न्यू डायरेक्शन। तो पॉजिटिव पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, और हर सिचुएशन में, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप और योर करियर और फैमिली पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, हर उसमें भी ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि अगर हम क्या होता है कि ऑफिस में कि बॉस है, ठीक है, अप्रेजल मेरा कम हुआ या बॉस से नहीं बन रही है, पॉलिटिक्स होती है बहुत सारी, आई अंडरस्टैंड। बट उसमें भी हमें मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो जाए हम किसी, हर हर किसी के लिए कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आई थिंक बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बारे में हम भी गलत सोचें। ठीक है, हम अपना काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर सकते हैं कि उनको कैसे बचा जाए। बट हर किसी को गलत ठहराना, है ना, हमेशा हर कोई गलत नहीं होता है, ये मैंने देखा। क्योंकि हम हमारे नज़रिए से वो हमें लग रहा है ये गलत है, बट अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचो ना, तो वो भी ठीक होगा कि हर इंसान गलत नहीं होता। तो उसके कुछ एक्शंस गलत हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हमारे नज़रिए से, हमारा नज़रिया होता है वो नेगेटिव होता है देखने का। जबकि ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान गलत होता है, नहीं होता। उसने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिए वो उसके लिए गुड थे, वो उसके लिए तो अच्छा लग रहा है उसको कि भाई मैंने सही डिसीजन लिए उस टाइम पे। तो सिचुएशंस को हमें यही होता है कि सिचुएशन को हैंडल करना, इसको बोलते हैं हम मेंटल टफनेस। कि अगर आपके पास सामने कितनी सिचुएशन आ रही है, किसी टाइप की सिचुएशन आ रही है, आप इतने मेंटली कैपेबल हो कि हर सिचुएशन को यू कैन हैंडल इजीली। कि आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती हैं, प्रोफेशनल में हो सकती हैं, सराउंडिंग में हो सकती हैं, और लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। दिस इज लाइफ। कि अगर आप एक ही तरह की लाइफ जीते जा रहे हैं हम, कि करियर में भी कोई चैलेंज नहीं आ रहा, हमें लाइफ में कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, देन इट्स मतलब एक तरह से उससे आप हम कुछ सीख नहीं पाते। जब अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तभी हम सीखते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं। आई वुड लाइक टू से जस्ट फोकस ऑन कीप लर्निंग्स, इन्वेस्ट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ लर्निंग्स। क्योंकि मुझे भी पहले ये लगता था ये क्या होती है वेबिनार्स वगैरह, मैंने कम से कम हंड्रेड्स ऑफ वेबिनार्स अटेंड कर डाली। और जहाँ भी मुझे कोर्स मिलता है ना, मतलब 4 4 लाख से लेकर मैंने 10-20 हज़ार का तो कुछ समझता ही नहीं हूँ।
ये ले लिया फटाफट, परचेज कर लिया, 4 लाख का कोर्स खरीदा है मैंने, 1-1.5 लाख रुपए इसमें लगाए थे। अपने दायरे से थोड़ा सा बाहर देखो, मतलब हार्ड वर्क मत करो ज्यादा, स्मार्ट वर्क का टाइम है अभी। ये हार्ड वर्क ये था ना पहले, जो ये था कि हार्ड वर्क करो, नहीं। अभी टाइम है, चैट जीपीटी ने हम हमारी लाइफ इतनी इजी बना दी है कि दिस इज द टाइम नॉट टू डू ओनली हार्ड वर्क भी करो, बट अगर हार्ड वर्क के साथ में आप थोड़ी सी स्मार्टनेस लगा दोगे ना, तो आप मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। सो दैट्स फॉर टुडे। मंथली आप उसको AWS का अगर 200-400 रुपये बिल भी आ जाता है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि देखो, लर्न करो, इम्प्लीमेंट करके देखो उसको, और एक्चुअल में जब हम प्रोडक्शन पे करके देखते हैं ना कोई चीज, तो वो कॉन्फिडेंस अलग होता है, राइट? सो ऑल राइट, दैट्स फॉर ऑल टुडे। Let's meet tomorrow with the new problem and we will discuss something new. Thank you guys.